ICSE Maths Class 8 Exercise 15 Question number 7. Now the question number 7 states that this is the question number 7. Copper and zinc in brass are in the ratio of 5:12. Find the weight of each in a brass statue weighing 85 kg. एक स्टैच्यू है जिसका ब्रास का बना हुआ है, इसका वेट है 85 kg। सॉरी, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 5:12 है। तो हमें वर्कआउट करना है कि 85 kg में कितना कॉपर है और कितना जिंक है। सो दिस सम विल बी डन लाइक दिस। द कॉपर एंड जिंक से क्या बना हुआ है, ब्रास का स्टैच्यू बना हुआ है। अब देखिए 5 और 12 का रेशियो है जिंक का, तो इसका टोटल वेट हो जाएगा, देखिए 12 + 5 दैट इज 17। मीन्स कॉपर इन 85 kg ब्रास, कॉपर का कितना होगा मास, दैट विल बी वर्कआउट लाइक दिस 5/17 5/17 into 85। देखिए 17 5 या 85, 5 5 या 25, so 25 kg copper will be there. Now the zinc in 85 kg brass will be equal to 12 by, this is the 12 by 17, 12 by 17 into 85. So 12 5 is 60, that will be 60 kg. Now the zinc is 60 kg and copper is 25 kg. Now come to the question number 8. Question number 8 states that 3 men invest rupees 35,000 rupees and 25,000 rupees and 30,000 rupees in a business. They share the profit according to their investment. How much will each one get if the profit is 1,44,000? अब क्या है, 3 आदमियों ने पैसा को इन्वेस्ट किया है, लगाया है। एक ने 35,000, दूसरे ने 25,000, तीसरे ने 30,000। प्रॉफिट कितना निकला उस बिजनेस से, 1,44,000। सो हाउ दे आर गोइंग टू distribute their profit? So you see here the amount invested by 3 men are as follows: 35,000, 25,000 and 30,000। हमने इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, दैट इज 7:5:6, 7:5:6 मीन्स इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है। नाउ द 7 + 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 18। The shares of in profit will be as follows। अब शेयर्स क्या होगा, अब देखिए यहाँ 7 है, तो 7/18 इंटू 1,44,000 को सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर 8,000, 8 इंटू 7 दैट विल बी 56,000। अब मैंने फर्स्ट वाले को मिलेगा 56,000। 5/18 into 1,44,000, again here it will be, and it will be equal to 40,000 profit will be given to him. Now the third person, the 6/18 into 1,44,000, that will be again 8,000, that will be equal to 48,000. So this will be the distribution: 56,000, 40,000 and 48,000. Distribution of profit. Now come to the question number 9. Now the question number 9 states that divide rupees 2,496 among A, B, C in the ratio of 1/3, 1/4 and 1/6.
तो हमें डिवाइड करना है अमाउंट को 2496। देखिए रेशियो क्या दिया हुआ 1/3, 1/4, 1/6। सो फाइंड आउट द एलसीएम of 3, 4, 6, that is 12. So 1/3 multiplied by 12, you will get 4 here. 1/4 multiplied by 12, that you will get 3 here. And 1/6 multiplied by 12, that is you will get 2 here. So 4 plus 4 is to 3 is to 2. So 4 plus 3 plus 2, that is equal to 9. Now divide 2496 in the ratio of 4 is to 3 is to 2. That will be like this, 4/9 into 2496. Solve it, you will get 11,000 Here the second one, that is 3/9. 3/9 into 2496, it will be equal to 832. Now the C, the 2/9 into 2496, solve it, you will get 554.66, and this will be the distribution of 2496 among A, B, C in the ratio of 4 is to 3 is to 2. Now come to the next question, that is question number 10. The boys and girls in a school of 1,344 students were in the ratio of 5 is to 7. When some new students were admitted, the number of girls increased by 60 and the new ratio became 3 is to 4. How many new boys were admitted? Let us find this one. देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है 5:7. So 5 plus 7, that will be equal to 12. So 5/12 into 1,344. तो बॉयज का आ गया हमारे को 560. गर्ल्स के लिए देखिए 7/12 into 1,344. सॉल्व कीजिए, you will get 784. मीन्स 784 गर्ल्स हैं, 560 बॉयज हैं. अब लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. अभी हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मालूम है. अब देखिए 784 में हमने क्या किया, 16 गर्ल्स को और एडमिट कर लिया. अब बॉयज़ को हमें नहीं मालूम कि बॉयज़ कितने एडमिट हुए. न्यू रेशियो बन जाता है क्या 3:4. पहले रेशियो क्या था 5:7. न्यू रेशियो हो जाता है 3:4 और 3 + 4 क्या हो जाता है 7 हो जाता है. तो बॉयज़ के लिए हमने क्या किया 4/7 into x. 4/7 into x, that will be equal to 800. इसी तो 784 plus 16, that यहाँ पर 4/7 क्या है हमारा 4 है, गर्ल्स है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ होगा लास्ट में, उसको हमने क्या किया, लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. सो 4/7 into x शुड बी इक्वल टू 800, क्योंकि गर्ल्स का संख्या मालूम हो गया. गर्ल्स का जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जब आफ्टर एडमिशन का पता चल गया है 800 है. सो 4/7, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. So 4/7 into x is equal to 800. Therefore, the x will be equal to 800 into 7 divided by 4. That will be equal to 1,400. So now we have got the total number of the student after admission, new admission. So 3/7 into 1,400. Now we will get here 600. अब 600 बॉयज हो गए, 800 गर्ल्स हो गए. नंबर ऑफ न्यू बॉयज एडमिटेड विल बी
अब न्यू बॉयज कितने एडमिट हुए थे, पहले कितने थे 560, तो 600 माइनस 560 दैट विल बी इक्वल टू 40, क्योंकि 600 बॉयज आ गया। अब पहले कितने थे 560 थे बॉयज, 560 बॉयज थे और 600 आफ्टर एडमिशन हो गए, तो न्यू स्टूडेंट कितने हो गए 40 स्टूडेंट हो गए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर of this question. Now come to the question number 11. Now question number 11 states that two numbers are in the ratio of 8:9. There are two numbers whose ratio is given, that is 8:9. If the smaller number is 3600, find the larger number. First, second part क्या है, if the larger number is 3600, find the smaller number. दोनों सिचुएशन में करना है। एक बार स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, लेट n1 and n2 be the two numbers such that n1 by n2 is equal to 8/9। रेशियो दिया हुआ 8:9। अब देखिए 8 क्या है, स्मॉलर है, 8 इज लेसर देन 9, सो 8 into x is equal to 3600. 8 into x is equal to, अब हमारे को ये नहीं मालूम है टोटल, सो क्या करेंगे हम 8 into x, that is 3600, so x will be equal to 3600 by 8, that will be equal to 450। अब हमारे को 450 पता चल गया। अब हम 450 इधर भी 450 इधर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, द रेशियो देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो, सो 8 विल बी मल्टीप्लाई बाय अगेन 450 और 9 को भी हमने 450 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे को क्या मिला, लार्जर नंबर जो मिलेगा 4050। अब सेकंड केस में क्या दिया है कि 8/9, 9 क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 8। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into y, दैट इज 3600। सो हम ये y जो मल्टीप्लायर है, y जो मल्टीप्लायर 9 में हमने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू द 8। तो हमने क्या किया, 9 में मान रिलेटेड विद द y, 9 को y से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 3600, सो y विल बी इक्वल टू 400। नाउ द स्मॉलर नंबर इज टू बी आल्सो मल्टीप्लाइड, दैट इज 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 400, वी विल गेट 3200। जो स्मॉलर नंबर हो जाएगा उस समय 3200, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। Now come to the question number 12. The question number 12 states that two numbers are in the ratio of 2:7. If the first is 4 times 189, if the first is 4 times the 189, find the second. यदि जो फर्स्ट टर्म है, देखिए 2:7 है, तो इसका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो बोल क्या रहा है कि इफ द फर्स्ट, ये जो मैंने 2 की जगह पर 4 टाइम्स ऑफ 1 मीन्स 4 into 189 अगर यहाँ पर होगा, तो व्हाट विल बी द सेकंड, फाइंड द सेकंड। बी पार्ट में क्या है, इफ द सेकंड इज 8 टाइम्स 94.5, फाइंड द फर्स्ट। Let us do the question number 12 here. Again,
देयर आर टू नंबर्स n1 और n2, इनका जो रेशियो दिया हुआ है 2:7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स किसका, ये वाला नंबर फर्स्ट, दैट इज 4 इंटू 189, दैट विल बी इक्वल टू 756। अब देखिए 756 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया इन ऑर्डर टू गेट द नंबर, so that if you multiply 3, if you multiply the 2, you will get 756. So it is 2 here, so that is why it will be multiplied and we can get the multiplier. जैसे multiplier मिल गया, the same multiplier will be multiplied to the second number also. अब देखिए 378 आ गया, so 2 into 378 is 2, means ratio to 7 into 378, दोनों को मल्टीप्लाई, इधर भी फर्स्ट वाले को सेकंड टर्म को भी, मीन एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। सो 756 ये होगा, 2646 ये होगा। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड आउट द मल्टीप्लायर। हमारे को बता दिया कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 189। So let us see what will be the 4 times of 189, that is 756. तब 756 के साथ करने पर तो हमने मल्टीप्लायर वर्कआउट करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 756. So that number is 378. Now we have got the exact multiplier. This multiplier will be multiplied to first as well as second. So while we are multiplying the 378 to first, we get 756. While we multiply the same, because as per the rule the ratio remains the constant when we multiply by the same number or we divide it by same number. So here we have multiplied both sides, 378. So we got the first one, that is 756. Second one will be 2646. This will be the answer of the A part. Now come to the B part. Here the second number की जगह पर क्या नंबर है, 8 टाइम्स ऑफ 94.5। अब देखिए 94.5 into 8 will be how much, 756. अब 756 को हमने 7 से डिवाइड किया in order to get the multiplier, that is 108. Now 108 will be multiplied to first one and second one. While we multiply this first, we get 216. While we multiply the second, we got 756. So the first number will be 216. Here the second number has been asked in the first part में 2646. Here first number has been asked. Now come to the question number 13. देखिए, if P is to Q, that is 4 is to 5, and Q is to R, that is 6 is to 7, find the following ratio, PQR and P is to R. हमें दो पार्ट करना है। देखिए P is to Q दिया हुआ है और Q is to R दिया हुआ है। First one is 4 is to 5, second is 6 is to 7. Find the following ratio, PQR. P is to Q is to R. अब देखिए क्वेश्चन में, if P is to Q, that is 4 is to 5, and Q is to R is 6 is to 7. We have to find first part, that is P is to Q is to R. अब हमने क्या, देखो यहाँ पर लिख दिया P is to Q, सेकंड में लिखा Q is to R. अब हमने एरो मार्क दिया है, P to Q, Q to Q, और ये करने का मतलब 4 is to 5, सेकंड रेशियो दिया हुआ है 6 is to 7. So 4 into 6, अब देखिए इसी तरह से किया है, 4 is to
4 into 6 और 6 into 5, 5 into 7। तो देखिए 4 into 6 करेंगे तो 24, 6 into 5 करेंगे तो 30, 5 into 7 करेंगे तो 35। So P is to Q is to R will be in the ratio of 24 is to 30, 30 is to 35। अब देखिए फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो। अगर फर्स्ट रेशियो दिया हुआ A is to B, सेकंड रेशियो दिया हुआ C is to D, तो इसको क्या है देखिए A इसमें दोनों में C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC BC। और देखिए अब यहाँ पर जब BC मिल गया देन BC is to BD, क्योंकि यहाँ पर तो हमने C को B से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर हमने D को भी B से मल्टीप्लाई कर देंगे। द सेम थिंग हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। सो दिस फर्स्ट सेकेंड मीन्स पहले वाले फर्स्ट रेशियो का विल मल्टीप्लाई बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड बाय C, that is AC BC। नाउ द सेकेंड रेशियो का फर्स्ट और सेकेंड को B से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट BC BD। नाउ द P इज टू R वर्कआउट करना है। अब देखिए P क्या है यहाँ पर देखिए P Q R है। P is to R, that is 24 to 35, 24 to 35, this will be the required answer। Now come to the question number 14। If A is to B is 1 and 1 by 2, is to 3 and 1 by 3, and B is to C is equal to 5 and 1 by 4, is to 7 and 1 by 2. Find the following ratio. A is to B is to C, and A is to C is to B. So first of all, let us do the A part of this question. You see here, A is to B is given, that is 1 and 1 by 2 is to 3 and 1 by 3. That can be converted into improper fraction, that is 3 by 2 is to 10 by 3. Here the BC, that is 5 and 1 by 4 is to 7 and 1 by 2. Both will be converted into improper fraction. It will become 21 by 4 is to 15 by 2. Now in order to get the A is to B is to C, again you see 3 by 2, 3 by 2, this is the first one, this is 3 by 2 and 10 by 3, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट रेशियो का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रेशियो के लिए तो हमने क्या किया, AC बताया था यहाँ पे AC BC, तो हमारे को C है वर्कआउट किया 21 by 4 है। सो 21 by 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट, मीन्स एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, सेकेंड को भी 21 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब द थर्ड वन दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10 by 3, 10 by 3 देखिए 15 by 2 है, 15 by 2 मीन्स इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से करके समझाया था, और इस क्वेश्चन को हमने इस मेथड से AC BC BC BD, देखिए ये हो गया AC, ये हो गया BC, फिर BD वर्कआउट करने के लिए B हमें मालूम है 10 by 3 और D हमें मालूम है 15 by 2, so 15 by 2 into 10 by 3. Now we will get, after solving this, we will get 63 by 8 is to 210, 210 by 12 is to 150 by 6, 150 by 6. This can be further simplified. 63 into 24 by 8 is to 210 into 24 by 12 is to 150 by 6 into 24. Why we have multiplied by 24? Because the LCM which I have taken it as a 24. 8, 12, 6 का 8, 12 और 6 का जो LCM है 24. So 24 LCM से हमने multiply कर दिया तीनों. So after simplifying,
we will get the value of A and B and C, that is 189 is to 420 is to 600. This will be the required answer of question number 14 A part. Now come to the question number 14 B part. We have to tell that A is to C is to B. Just पहले हमने ABC का वर्कआउट किया था. Now here we will just shift the number, that is 189 as it is A. B has now shifted to the third place and C will be 420. So 189 is to 420 is to 600. This will be the answer of the question number 14 B part. That's all.